Okay, so we are live. Uh, Hello everyone, welcome to ACM USICT. I am Gaurav Jain, chairperson of ACM USICT student chapter. ACM, or Association for Computing Machinery, is an international learned society for computing and related fields. Here at ACM, we promote and facilitate various computing activities, whether it's research or corporate world. We have all. At USICT ACM chapter, we try to facilitate the activities conducted by Association for Computing Machinery worldwide at our campus. ACM is the world's largest computational society. It was founded back in 1947 and it's around 73 years we are here in this organization. It's a chain of all the computer enthusiasts where we see a world computing helps solve tomorrow's problem, where we use our knowledge and skills to advance the professionals and make a positive impact. At USICT, or University School of Information and Communication Technology, it's the university school at Guru Gobind Singh Interpus University. Here at ACM USICT, we have this year planned out various clubs, namely ACM Webify, ACM Appetite, the ICPC Club, ACM Innovate AI, ACM RobIoTics, ACM Cyber Cell, ACM Entrepreneurs Arena, and ACM Research Cell. Each group will focus on its technology and try to facilitate them at USICT campus. More about ACM benefits, let me share my screen here. So have a look at this video. Now let's have a look at the various benefits of ACM USICT gives to you. Let's play the video for benefits of ACM USICT.
Now I would like to invite Dr. Rahul Jory, the faculty mentor of ACM USICT. He is the inspiration behind all of these activities we take place at this campus. Sir, please do the honors. Hello, Gaurav. Is it audible? Yes, sir. Okay. Good afternoon, all. Good afternoon, dear students of USIT. And as a branch head of the ACM USIT chapter, I welcome you all to the department, USICT. And irrespective of the program in which you have taken the admission, maybe the BTech, MTech, or MCA, the ACM chapter caters to the need and requirement of all the students. And this is a happening chapter of USIT, and we started this chapter around 2 years back, so it is not that old chapter, but those are those students of the MTech program who would have come from after doing the BTech from the different colleges of the IPU University or from the non-IPU University may would have been members of the ACM chapter in their own colleges, so they would be already knowing about it. But yes, for the BTech student, it would be a first time in venture or first time knowing about what the ACM chapter is all about. So we have got big IT companies in IT industry. One of them is the ACM, and ACM is also given a credit for starting the awards and rewards for students as well as professionals who excel in the IT field. For example, we have got ACM Turing Award, and this is an award given to a person or a group of person who for the outstanding research in the area of the computer science. And they started the award in the year 1965. So roughly around 55 years have gone by, and it was surprised to know that only one Indian has been able to get this award, and that too was Professor Raj Reddy, way back in the year 1994. So this also speaks ki yes, we as a Indians, we as a student community, have not been able to do that good in the area of research in the computer science at the international level. That is why we have not been able to get this award. But then, nevertheless, it's always a fresh beginning, a new beginning, and I welcome. We have also got a student office bearers in our chapter, and the elections were held last month only, November 2020. So it's a I welcome them also as a part of this orientation program, and I also welcome all the students to become a part of the ACM chapter, because right now the membership is free of cost due to the pandemic, global pandemic period. So it's the best time to avail the opportunity and join the ACM chapter. Because by doing it, not only you will become a member of the international community, but that also will help you to get admission, or what we say, uh, good insight of the many large number of tutorials, documentations, videos. So many number of the e-resources are there by the ACM. So you can access those resources right there on the click of a button on your machines on your desktop, and you can become a part of the global community. And this is a chapter wherein we organize large number of events throughout the year. So this time though we have done the elections, but next time we expect a larger participation from the new member also, especially the BTech first year, because we expect them to become a part of the ACM and contribute to it. Just becoming a part is just not the objective. Point is, we should become a part of it and contribute in larger perspective. For example, be a part of the event for organizing hackathons, for quiz, for coding competition, means for any number of the technical events which we organize. We would like you to become a part of it and contribute wholeheartedly. Maybe as an organizing team member, or maybe as a participant in any capacity, whatever that feels you comfortable. But be active in your college life, so that not only you enjoy the college environment, but also enrich yourself technically. So both way it will be a good event, and I wish all the best to all the current office bearers. So we have Gaurav as a chair, Vardhan as a vice chair, and various clubs have also been formulated. So depending on your choice of interest, maybe IoT or big data or machine learning, whatever you feels you interest, become a part of it, and then we can have multiple newsletters coming out for every club, maybe on monthly basis or quarterly basis. So I won't take much of your time. So here is wishing all the best for the orientation program, and over to you, Gaurav. Thank you, sir. Thank you so much. About the benefits of ACM USICT. By joining
ACM, you can grow as an individual in your college life. You get access to ACM's flagship publication. It's an ACM popular e-newsletter. So basically, you can get updated to the various technological reforms happening right now. See, the IT industry is very dynamic. It changes over the night. And to get updated with it, it's the first motto of, as a computer science professional. So you can get access to all these at free of cost. Along with this, you get a lifelong learning center where you can access to various courses, books, and publications free of cost. You can get access to thousands of research paper in ACM's digital library at zero cost. That means just by joining ACM, you can get access to all of these. Also, ACM organizes the ACM Student Research Competition in collaboration with Microsoft. So you can grow your research skills, you can find out new technologies or new areas of interest by just participating in such competitions. And also, they have got large prizes too. At ACM USICT, we have also opened clubs under the name of ACM. So here we have 8 clubs, namely Appetite, Webify, Research and Development Cell, and Entrepreneurs Arena, Cybersecurity Cell, Innovate AI, and Robiotics. So according to your area of interest, you can join, connect, collaborate, create projects, find out new things. It's more about networking and growing. Also, we have ACM career and job centers. Many of you are aiming towards placements and career services ahead. So you can just go to jobs.acm.org and check out various openings throughout the world, including America, India, Ukraine, everywhere. You can just check out whole world's job opening right from one website. Also, ACM have got specific interest groups where we have people from worldwide. They work towards particular technology. You can be a part of them. Also, we have sponsored conferences and tours. Basically, for research purposes, ACM organizes conferences throughout the year. Various conferences are held. So you can be part of those conferences and even visit that places. In our, I want to like to mention our previous ACM member, Abhishek Khandelwal. He was also our secretary, and he went to New York for presenting his paper on cyber security and law. Also, ACM has summer and winter school. So basically, you can learn various technologies in your summer and winter breaks by enrolling to these summers and winter schools. All these are just in one membership, and that for now, before in 2020, we are giving it for free. About our previous events, we have sponsors from various big name. We collaborated with Coursera to provide thousands of free courses for students of USICT. We even organized workshops with Docker Delhi, Lenskart, Coding Ninjas. We had competitions, and we even provide faculty development programs from CADASC India. We have speakers from University of Cincinnati. Professor Rajke Bhatnagar visited our campus and delivered a talk on data mining in February 2019. Also, we had a professor from University of Hungary. He also gave a talk on. It was a distinguished speaker program, and the topic of the talk was discrete categories. We had speakers from Triple IT Delhi, Delhi University, JNU Delhi, IISc Bangalore. Also, we as an alumni meet we conducted, where we had speakers from Amazon, TCS, Xenon, Stage 3, and Society General. So it was a wholesome experience when you join ACM. You can either be part of its events, or you can be a in organizing committee. So it's very easy to join ACM. I would suggest everyone to join here and connect with your group members, seniors, and explore the various technological fields. And talking about technological fields, here we had clubs under the ACM USICT branch. Now I would like to invite each club's leads and vice leads to explain you those technologies and why should you work towards these. I request Divyansh Rastogi to take over now. Thank you, Gaurav. And okay, the first club that we have today here is ACM Innovate AI, which is an all-in-one destination club to hone your machine learning, artificial intelligence, and data science skills. And who better to hear it from than the lead and vice lead themselves? Shashwat and Vaibhavi, all over to you guys. Hello, am I audible?
Yeah, Hello. Shashwat, you're audible. Okay, thank you for the introduction. Good afternoon, everyone. My name is Shashwat, and I'm a third year IT student at USICT, and I'm leading the ACM Innovate AI Club along with Webify, who's a third year CSE student. And today I would be giving you people a very brief introduction to AI and its application. I believe a lot of you are freshers and possibly new to AI. Some of you might have worked on it, while some of you must be planning to pursue this in the near future, or maybe some of you even have a fancy of taking it as a professional career down the line. First of all, may I ask how many of you are freshers in here? कोई है जो फ्रेशर है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता एआई के बारे में? ओके, तो सब सारे फ्रेशर हैं इनमें से? ओके ओके देन, तो मैं बहुत बेसिक से करूंगा शुरू. तो ऑल इन ऑल, दिस इज अ वेरी demanding and progressive and well paid off skill to have, and it is also very future proof. I would also, down the line in this webinar, shed some light on all the different jargons which are used in the industry in relation to AI, which gets a lot of people confused on as to what they mean. Because बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं AI कर रहा हूँ, ML कर रहा हूँ, डीप लर्निंग कर रहा हूँ, डेटा साइंस कर रहा हूँ, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग जार्गन यूज करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं डिफरेंस है. ऑल्दो ये सब दे लाई इन द सेम स्पेक्ट्रम, बट जब चीजें बहुत जनरलाइज होना शुरू हो जाती हैं, जैसे हम पहले स्कूल में फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में आते आते फिजिक्स के अंदर भी सब्जेक्ट्स है, सेमीकंडक्टर एक बहुत जनरलाइज चीज आई, तो उसको हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं. तो वैसे ही हम कह सकते हैं डीएल एमएल उसके अंदर एआई के अंदर ही आते हैं. आई वुड शो यू अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट. पहले आप आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ एक, विल बी बेटर विद दैट. ओके, so is the screen visible? Okay, तो ये basic introduction है. What is AI? What is intelligence? Intelligence is basically the capacity to learn and solve problems. AI क्या होता है? AI is a simulation of human intelligence by machine. So it is basically the ability to solve problems, the ability to act rationally, the ability to act like humans. तो basically पहले ऑर्थोडॉक्स प्रोग्राम मतलब विदाउट एआई एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है बहुत फिक्स होते हैं, मतलब सेम इनपुट में आपको सेम आउटपुट मिलेगा. आपका कोड, आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता, तो वो आपको बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटपुट्स ही देगा. पर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंडिपेंडेंटली आपके कोड को ऐड करना होता है. सपोज जैसे सब वीडियो गेम्स खेलते हैं, फीफा सबने खेला है, तो उसमें जब आप उसके साथ खेलते हैं सीपीयू के साथ, तो हम हर चीज को हार्ड कोड नहीं कर सकते हैं. हार्ड कोड इन द सेंस कि जैसे इस समय इस प्लेयर के पास बॉल है, इतने डिफेंडर्स खड़े हैं, इस समय इतनी अटैकिंग मिडफील्ड है, तो हर सिचुएशन हम हार्ड कोड नहीं कर सकते हैं. मतलब एज इन कि जो विदाउट एआई एप्लीकेशंस है उसमें जो भी आपका प्रोसेस का आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब वो पहले से कुछ ना कुछ कोडेड है, मतलब हर चीज पहले से कोडेड है, वो कुछ इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है. पर गेम्स वगैरह हम देखते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बहुत सी चीजें इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है. मतलब हम हर सारी रियल लाइफ सिचुएशंस कोड नहीं कर सकते. मतलब कोड कर भी दे तो कितने इफ एल्स लगाओगे, कितनी, मतलब अगर हम बेसिक से करें, अगर कोडिंग नहीं भी आती तो इफ एल्स तो पता ही होगा ना, ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो, कितने इफ एल्स लगा लोगे. अगर इतने आपने मान लो लगा भी लिए तो आपका बहुत बेकार, मतलब बहुत डमी एप्लीकेशन बनेगा, इतना डमी एप्लीकेशन बनेगा कि बहुत स्लो होगा पहली बात तो, और सारे आप किसी कोड भी नहीं कर सकते. सो वी वुड वांट एन एप्लीकेशन व्हिच कैन थिंक रैशनली, व्हिच कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, और हम जो डेटा पे काम कर सके, जिसको हम ट्रेनिंग दे सके. जैसे ह्यूमंस हैं, हम बचपन से सीखते आते हैं डेटा के ऊपर, मतलब हमारे नॉर्मल सराउंडिंग्स के ऊपर हम जानते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमें करंट लगेगा, तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं. तो बेसिकली हमें ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो रियल लाइफ थ्रू डेटा ओवर द टाइम उसको ट्रेन कर सके, तो जो फिक्स्ड इनपुट के साथ फिक्स्ड आउटपुट्स ना दें, मतलब चेंज अपने आप अपनी एबिलिटी टू चेंज रख सकें. तो बेसिकली ये है. तो सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ एआई: रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन, परसेप्शन, ability to move, manipulate objects. It is a science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. ये सब basic चीजें which I just shed some light on right now. अब ये definition है: computers with the ability to mimic or duplicate the functions of human brain. It is the intelligence of machines and the branch of computer science which aims to create it. थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं. एक्चुअली एआई इज नथिंग न्यू. एआई के जो एल्गोरिथम्स हैं, सब चीजें जिसके ऊपर एआई चलता है, एल्गोरिथम जो इसके बेसिक मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं, जिसके ये सब बहुत पहले से बन चुके थे, 1950 से 1960 से हैं, पर उस समय ये इंप्लीमेंट नहीं होता है बिकॉज कंप्यूटेशनल पावर बहुत
लिमिटेड थी। एआई मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका अच्छा सीपीयू होना चाहिए, अच्छा जीपीयू होना चाहिए ताकि हो सके। पहले उतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी, तो पहले ये सारे बहुत होक्स लगता था कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। ऑल द मैथमेटिशियंस ने ये सारे कॉन्सेप्ट दे दिए थे, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो बहुत टाइम तक ये ऐसी थे, मतलब इन फॉर्म ऑफ प्योर थ्योरेटिकल पेपर्स थे। ओवर द ईयर होते रहा। अब इनकी एप्लीकेशन से पहले हम कुछ इनके जार्गन देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो आप सबने, आपको पता ही होंगी काफी चीजों के बारे में, तब भी विल शेड सम लाइट ऑन इट, पर उससे पहले हम कुछ जार्गन देख लेते हैं जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो इज दिस डायग्राम विजिबल? तो अब ये देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम एआई पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग होता क्या है? तो ऐसा मान लो कि एआई एक सुपर सेट है। एआई के अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। जब चीजें बहुत, जैसे मैंने बोला, जब चीजें बहुत जेनेरिक होने लग जाती हैं तो उसको हम एज अ होल डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हम मशीन लर्निंग को एआई के अंदर पढ़ते हैं और डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ते हैं। अब हम इसको डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं? तो पहली बात हम आते हैं कि एआई मतलब हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज करके एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मतलब एआई एप्लीकेशन बनाना हमारा फाइनल गोल है। और हम इस गोल को कैसे अचीव करते हैं? डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, उनके मॉडल्स यूज करके अपनी एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली लिखा है कंप्यूटर्स दैट कैन इमिटेट ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड बिहेवियर, वो एआई एप्लीकेशंस हैं। और हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज करके एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या वो है बेसिक डिफरेंस? तो पहले आई मशीन लर्निंग मॉडल, उसके बाद है डीप लर्निंग मॉडल। आप जब कोर्सेज भी लेंगे तो आपको पहले मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी, फिर डीप लर्निंग पढ़ाई जाएगी। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स दैट इनेबल एआई इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डेटा। तो बेसिकली machine learning provides us with statistical tools to explore the data. और अब उसके बाद हम आते हैं कि मशीन लर्निंग में भी बेसिकली तीन, अब ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन मशीन लर्निंग की। अब मशीन लर्निंग भी तीन तरह की होती है, मतलब इसमें तीन टाइप ऑफ पैराडाइम्स यूज होते हैं मशीन लर्निंग में। एक होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक होता है कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और एक होता है रीइंफोर्स मशीन लर्निंग। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि क्या है, इनका मतलब क्या है, ताकि बाद में अगर आप इनको स्ट्रीम लेना चाहें तो यू वुड नो कि इसका मतलब ये है। कोई आपको कह रहा है कि हम आपको ये कोर्स देंगे, तो यू नो कि इसका मतलब क्या है, मैं एक्चुअली पढ़ के आ रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग है। अब तीन टाइप की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में होता है कि हमारे पास पहले से हमारा लेबल डेटा होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। मतलब जब हर कोई मॉडल मशीन लर्निंग में या एआई में हर कोई पुराने डेटा की वजह से ट्रेन होता है, पुराना डेटा होता है, उसकी वजह से डेटा ट्रेन होता है, फिर भी नए डेटा में काम करता है। तो जैसे एग्जांपल है सुपरवाइज का, कि जैसे आप, कोई बच्चा है, ही डजंट नो दैट कि ये डॉग, मतलब पहली बार कुत्ते को देख रहा है, किसी डॉग को देख रहा है, तो ही डजंट नो कि डॉग कैसा एनिमल है, काटता है नहीं काटता, उसने जाके छू लिया, उसने काट दिया। सो ही विल नो फ्रॉम देन कि हाँ डॉग्स को ऐसे छूना नहीं है, बट सम अदर डे ही माइट टच सम अदर डॉग, और उसने काटा नहीं। सो ही विल नो कि यार उसको पता लग जाएगा, अब उसका मॉडल और ट्रेन हो चुका है। उसको पहले लगता था कि हर कुत्ता काटता है, बट देन ही थॉट कि हर कुत्ता नहीं काटता। सो नेक्स्ट टाइम वो सोच समझ के छुएगा। ही नोस कि मतलब उसको पहले डेटा मिल चुका है, डेटा का आउटपुट मिल चुका है कि इस कुत्ते ने मुझे काटा, इसने नहीं काटा। सो ही वुड नो कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं सोच समझ के छूंगा। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, कि उसको पता था, उसको पहले पास में एक्सपीरियंस में उसको लेबल डेटा मिला था। एक होता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, जिसमें हमें लेबल डेटा नहीं मिला होता पास में। तो उसमें बेसिकली इसमें हम करते हैं क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स की, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करो साथ में, उनकी सिमिलर फीचर्स को देख के। तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये होती है कि इसमें कोई डाटा, हमें इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में डेटा कुछ लेबल मिलता है, कुछ लेबल नहीं मिलता। तो ये तीन टाइप की हो गई मशीन लर्निंग। अब डीप लर्निंग में आते हैं। अब डीप लर्निंग की जरूरत की पड़ी, पहले मशीन लर्निंग थी उसके मॉडल। अब डीप लर्निंग इसलिए आया बिकॉज मशीन लर्निंग बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज करने हैं, फ्रेम्स, किसी फोटो में से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम नहीं कर पाते, बिकॉज वो बहुत स्टैटिस्टिकल और प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेस्ड होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। पर फिर इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए साइंटिस्ट वांटेड टू डेवलप समथिंग व्हिच कैन some kind of intelligent model that can mimic the features of human brain। तो उन्होंने देखा कि ह्यूमंस कैसे करते हैं। तो ह्यूमंस के ब्रेन में बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, जो डिफरेंट न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख के देखा गया स्कैन्स में कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख के डिफरेंट न्यूरॉन्स फायर अप होते हैं। जैसे आपने अभी एक लेट्स से अगेन कुत्ते को देखा, किसी डॉग को देखा, तो आपके ब्रेन में परसेप्टरी रीजन के स्पेसिफिक न्यूरॉन्स फायर होते हैं। नेक्स्ट टाइम भी आप उस सेम कुत्ते को देखोगे तो आपके सेम ब्रेन के सेम परसेप्टरी न्यूरॉन्स फायर होंगे। तो मतलब एक बेसिकली ब्रेन में इन न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन से डिफरेंट लॉजिक्स बनते हैं। तो उन लॉजिक्स को हम
कंप्यूटर साइंस में कैसे मिमिक कर सकते हैं, उस बेसिस पे डीप लर्निंग बनी है। तो डीप लर्निंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विल बी कनेक्टेड टू मिलियंस अदर न्यूरॉन्स। तो वैसे ही इसमें हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। हर न्यूरॉन या नोड को आप एक न्यूरॉन मान सकते हैं उसमें। सो मेन आइडिया इज टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। अब बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या है, उसके लिए एक और ये दिख रही है, इज दिस फोटो विजिबल? तो दिस इज अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क। आप इनको न्यूरॉन मान सकते हैं। हर एक न्यूरॉन हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस लेयर में ये इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, बीच में अभी तो इसमें एक ही हिडन लेयर है, बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती हैं बीच में, काफी मिलियंस ऑफ हिडन लेयर, और ये हर एक नोड है, इसको आप न्यूरॉन मान सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक न्यूरल नेटवर्क। ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें एक इनपुट लेयर है, एक ही आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर तो एक ही होगी हर में, बट इसमें हिडन लेयर एक ही है। वैसे बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं, और ये बेसिक आर्किटेक्चर है। ये आपको बता रहा है कि जो इमेज दी है ये डॉग है या कैट है। जैसे हमने इसको इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड में डॉग की इमेज दी होगी, हर एक पिक्सल ब्रेक हुआ होगा, जितने इसमें पिक्सल होंगे उतने इसमें इनपुट नोड्स होंगे, हर पिक्सल को वो एक मैथमेटिकल वैल्यू से कॉरेस्पॉन्ड करेगा। फिर ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इनके हर के साथ एक वेट एडेड होता है, और ये वेट होते हैं ट्रेंड। हर बार अगर हम इसको नया ट्रेनिंग डेटा दूंगा तो ये वेट्स अलग अलग तरीके से ट्रेन होंगे, और फाइनली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये सारी चीजें ट्रेन हो जाएंगी। मतलब हर नोड के करस्पॉन्डिंग एक वेट होगा एसोसिएटेड। अब ट्रेनिंग के बाद जब भी मैं उसको डॉग, जैसे मैंने उसको डॉग और कैट के ऊपर ट्रेन किया है, तो मैंने उसको 100 फोटोज डॉग की दी, 100 की कैट की दी, लेबल कर दिया कि ये डॉग की है, ये कैट की है। तो ही नोज की, मतलब दिस मॉडल नोज दैट ये डॉग की फोटो है, अब ये कैट की फोटोज है। अब मैं ट्रेनिंग के बाद उसको कोई और फोटोज जो डॉग या कैट की जो मैंने पहले प्रोवाइड नहीं करनी, जैसे मैं अपने डॉग की फोटो दूं उसको, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये डॉग की फोटो है। कैसे करेगा? बिकॉज हुआ क्या है कि इसके हर एक हिडन लेयर में, ये हिडन लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर में एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है ओवर द टाइम, ट्रेनिंग के टाइम में। कि अगर जैसे ये पहली हिडन लेयर है, दूसरी हिडन लेयर है, जैसे फोर्थ हिडन लेयर ने ओवर टाइम रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मैं आंखों को रिकॉग्नाइज करना सीख गया है, फोर्थ हिडन लेयर। फिफ्थ हिडन लेयर एनिमल की नोज आइडेंटिफाई करना सीख गया है। सिक्स्थ हिडन लेयर उसकी ईयर्स आइडेंटिफाई करना सीख गया है। सो ओवर टाइम ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग डेटा से चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ये डॉग दिखेगा तो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ फायर होंगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग, अब मैं उतने डिटेल में जाऊंगा नहीं, कि बीच में हम अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शंस एक स्पेसिफिक, अगर जैसे अगर ये हिडन लेयर एनिमल की आईज को आइडेंटिफाई करती है और उसने डॉग की आई देखी, और मान लो कि पहले 5 नोड्स डॉग की आइडेंटिफिकेशन में हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रहे हैं एक एक्टिवेशन फंक्शन के साथ, तो ये 5 न्यूरॉन्स हाई एक्टिवेशन वैल्यू के साथ एक्टिवेट होंगे, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी आउटपुट देंगे। तो ऐसे ही मतलब और चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, अलग अलग पैटर्न्स देख सकते हैं हम इमेज के, डीएनए पैटर्न देख सकते हैं, प्रोटीन पैटर्न। ये तो बहुत ओवर भी दे रहा हूँ, तो एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है, इसमें हर न्यूरॉन हर के साथ कनेक्टेड है नेक्स्ट लेयर के। तो ये बेसिक न्यूरल नेटवर्क है। अब न्यूरल नेटवर्क भी जैसे मैंने बोला सुपरवाइज, जैसे मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, वैसी डीप लर्निंग में भी 3 टाइप के पैराडाइम्स होते हैं। दोस पैराडाइम्स आर बेसिकली डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो बेसिक होता है, अगर हमारा डेटा नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम एएनएन यूज करेंगे। एक होता है सीएनएन, दैट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, अगर हमारा इनपुट इमेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है या फ्रेम के फॉर्म में तो हम सीएनएन यूज करेंगे। एक होता है आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, अगर हमारा इनपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज काइंड ऑफ डेटा है, तो हम आरएनएन यूज करेंगे। टाइम सीरीज मतलब ऐसा डेटा है कि हम जैसे हम म्यूजिक नोट को ट्रेन कर रहे हैं कि हमें म्यूजिक नोट जनरेट करनी है, तो म्यूजिक नोट बहुत टाइम स्पेसिफिक होती हैं, मतलब टाइम के साथ नोट्स चेंज हो रही है, वो मैटर करता है काफी, तो वो एक टाइम सीरीज डेटा हो गया। अगर हमें म्यूजिक नोट जनरेशन सीखना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में गाने की ट्यून दे दी, अपने आप ट्यून उसके बाद की जनरेट करना शुरू कर देगा। हमने स्टार्टिंग में 5 सेकंड की दी, वो उसी से मैचिंग ट्यून, ताकि नेक्स्ट 10 सेकंड की ट्यून दे देगा जो उसके साथ मैच करे, मतलब जो उस गाने में साथ में मैच करे इंटेलिजेंटली। तो इस काम के लिए हम आरएनएन यूज करेंगे। तो ये तो बेसिकली आपके ये होगा एआई एमएल डीएल। अब डेटा साइंस क्या हुआ, डेटा साइंटिस्ट क्या हुआ? अब डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो इन सब चीजों में काम करते हैं। सो इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट देन यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दीज एमएल डीएल, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट सुपरविजन मॉडल्स, डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो डेटा साइंटिस्ट को इन सब चीजों में काम करनी होती है। इसके साथ साथ डेटा साइंटिस्ट को थोड़ी मैथमेटिकल टूल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए इसके अलावा भी, ताकि डेटा को प्री प्रोसेस कर सके, इंपॉर्टेंट डेटा को एनालाइज कर सके ग्राफ्स के थ्रू, वो सब चीजें। तो ये तो बेसिक थी, और बाद में इसकी एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिन में एप्लीकेशंस हैं इसकी, म्यूजिक में जो मैंने बताया, मेडिसिन में ये भी है कि आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं अच्छे से, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमन एनालाइज नहीं कर सकते नॉर्मली। और फिर टेलीकम्युनिकेशंस में है, रोबोटिक्स एंड एआई, ये तो काफी सुना होगा, सबने सुना होगा। गेमिंग में है, एआई गेमिंग होती है।
बैंकिंग में स्टॉक्स इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, स्मार्ट सॉफ्टवेयर और बाकी सब एप्लीकेशंस हैं। तो ये सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये तो मतलब बहुत बेसिक सा वो है ओवरव्यू एआई का, तो दैट जिन लोगों को परस्यू करनी है बाद में उनको थोड़ा सा मतलब पता लग जाए कि है क्या क्या चीजें हैं। कोई आप कहीं से कोर्स ले रहे हो तो वो क्या पढ़ा रहा है, एआई पढ़ा रहा है, एमएल मतलब क्या है। तो बस यही चीजें हैं, दैट्स इट, आई नॉट टेक मोर टाइम, दैट्स इट, थैंक यू। Thank you, Shashwat. That was an amazing pitch. And now the second club that we have is ACM Webify. The Web Development Club aims specifically at teaching and invigorating the art of web development. I'd like to invite ACM Webify lead Kushagra and vice lead Kashish Jain to throw some more light on the same. Yeah, thank you, Divyansh. I will now share my screen with all of you. Is my screen visible? So hi, yeah, I am Kushagra, and can you see the presentation over here? Present. So hi, my name is Kushagra, and I am a Django web developer. I'm in third year IT, and I'm the executive lead of ACM Webify Club. And here my vice lead is Kashish Jain, and he is a MERN stack developer. तो आपने अभी एआई के बारे में इतना सुना, तो आप क्लाइंट को कैसे दिखाओगे, आपका एआई जो मॉडल बनाओगे उसको वो थोड़ी दिखाओगे कि आप जो मॉडल वगैरह बना रहे हो, तो आप कैसे उसको मतलब यूज कैसे करेंगे लोग उसका। तो आप बेसिकली या वेबसाइट बनाओगे या ऐप बनाओगे। तो वेबीफाई क्लब वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बनाने पे फोकस करता है कि जो लोग वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करता है। आप लोगों ने आई एम श्योर 12 से पहले भी HTML CSS में काम किया होगा, लाइक वेब पेजेस बनाए होंगे। तो दिस इज अबाउट दैट ओनली। तो हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेब डेवलपर कौन होता है, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रेशर्स हैं। तो थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि वेब डेवलपर कौन होता है। जो मतलब वेब डेवलपर एक आर्टिस्ट की तरह होता है जिसे चीजें बनाना अच्छा लगता है। तो और वो क्या क्या काम करता है, डिजाइन करता है वो वेब पेजेस को, और वेब पेजेस को बहुत यूजर इंटरैक्टिव बनाता है। तो आपको आप किसी भी वेबसाइट पे वगैरह पे जाते हो तो आपको अगर अच्छा यूआई देखने को मिलता है और ज्यादा इंटरैक्टिव होती है वेबसाइट, तो क्लाइंट ऑब्वियसली उस तरफ ज्यादा जाता है। तो और एंड और क्या काम करता है वेब डेवलपर, वो लॉजिक लिखता है कोड। तो इंफॉर्मेशन जैसे कि डेटाबेस से फेच करता है वो और उसको डिस्प्ले करता है वेबसाइट के ऊपर। ये सब काम करता है वेब डेवलपर, होस्ट करता है वेबसाइट को। So this is the introduction of who is a web developer. So अब आते हैं उसके बेनिफिट्स पे कि आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे तो क्यों जाओगे। तो देयर इज दिस गाय कॉल्ड शो मी द मनी, लाइक व्हाट इज, मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें। तो पहली बात तो ये कि इट इज सुपर इजी टू लर्न। जैसे कि आपने पहले भी HTML वगैरह बनाया है तो बहुत ज्यादा आसान है ये करना। मतलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इसके अंदर कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। आपको बस मतलब लैपटॉप लेना है और आप रोज वेबसाइट बना सकते हो। लाइक बहुत ही इजी है। तो आप अपने शो ऑफ योर स्किल्स, लाइक आपके पास जब आप वेबसाइट बनाओगे आप दूसरों को दिखाओगे कि आपने ये बना लिया है, तो दूसरा भी मतलब कि आप दिखा सकते हो दूसरों को कि मैंने ये बनाया है, तो दे विल बी एबल टू व्यू दैट। सो एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको इंटर्नशिप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी इंटर्नशिप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि लोग फ्रंट एंड में चीजें बनवाना चाहते हैं, वेब डिजाइन करवाना चाहते हैं। किसी की वेबसाइट बनाओगे आप किसी क्लाइंट के लिए या फ्रीलांस करोगे तो आप वो सब कर सकते हो। और चौथा पॉइंट है कि अगर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, आप रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट डाल सकते हो। उसमें आप जैसे कि पहले मशीन लर्निंग की बात हुई है, तो आप उसका मॉडल मतलब इंटेलिजेंट बना सकते हो अपनी वेबसाइट को कि वो रेकमेंड करे मूवीज वगैरह, तो आप वेबसाइट में वो सब डाल सकते हो। So now Kashish will take over from here. Thanks, Kushagra. Hello, everyone. I am Kashish Jain, CSC from CSC second year, as introduced by Kushagra.
सो नाउ हमें पता है कि वेब डेवलपमेंट क्या है और क्या इसके फायदे हैं। सो अब कैसे स्टार्ट करना है इसे, ये हम देखेंगे। क्या आप ऑनलाइन जाओ और वहाँ पे, मतलब ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है वेब डेवलपमेंट, तो उसके बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूडेमी पे हैं, कोर्सेरा पे हैं। सो हमें एक बेसिक आइडिया वहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। सो बेसिक आइडिया हमें पता है कि क्या यूज होगा। उन टॉपिक्स पे हमें डीप में जाने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। सो हमें अब पता है कि वेब डेवलपमेंट क्या है और हमें कैसे करना है। सो अब स्टार्ट हम बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट्स करने हैं हमें। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे, उनमें दिक्कतें भी आएंगी, एरर्स आएंगे, तो उनको सोल्व कैसे करना है, वो बग्स देखेंगे। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे गूगल सर्च पे, स्टैक ओवरफ्लो पे हमें मिल जाएगा। उनके ब्लॉग्स भी होते हैं, तो वो एरर सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, वो पहले भी सबके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो उनके सॉल्यूशंस भी हमें मिल जाएंगे। सो हमें पता है कि वेब डेवलपमेंट कैसे करना है और कैसे इसको स्टार्ट करना है। सो अब डेवलपर बनने के लिए कुछ मेन चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। सो जब भी आप आगे जाओगे तो कभी भी अकेले काम नहीं कर रहे होगे, हमेशा कोई ना कोई टीम होगी। तो उस टीम के लिए अब हम कोड करेंगे तो सिर्फ वो कोड हमारा नहीं होगा, तो वो कोड पूरी टीम देखेगी। जैसे हमारे टीममेट्स हैं, सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, तो कोड एकदम क्लीन होना चाहिए। कोड पढ़ते ही हमें पता चलना चाहिए कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो उसके लिए हम फंक्शन के साथ कमेंट्स लिख सकते हैं कि क्या पता चल जाए फंक्शन ये काम कर रहा है। और हमारे सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए, केसिंग कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो क्लीन कोड हो तो हमारे टीममेट्स को पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरा, जब भी हम कोड लिख रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा कोड काम करना मुश्किल है, तो कोई ना कोई एरर जरूर आएंगे और हर किसी के साथ आते हैं। तो एरर को डीबग कैसे करना है, इसकी आदत हमें पहले से होनी चाहिए। तो डीबग करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। तो गिटहब पे जाके जो टॉपिक हम यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से हम फैमिलियर हैं, तो उसके रेपोस एक्सप्लोर करके, उसके इश्यूज पे काम करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एरर्स को डीबग कैसे करना है। तो उनकी डीबगिंग की आदत डाल के फिर अब हम कुछ भी प्रोजेक्ट करें तो कोई हमें बीच में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो प्रोजेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो अब हम वेब डेवलपर बिल्कुल बन जाएंगे। So now it's your turn and you are ready to boom. All right, thank you, Kushagra, and thank you, Kashish. Okay, so next club that we have now is ACM Robotics Club, where you will learn all sorts of technologies in robotics and Internet of Things. And now I'm just running short of words. I think it's time for ACM Robotics lead Saurabh and vice lead Abhishek to carry on. Thank you, Divyansh. So, just a minute. Is my screen visible? So, good afternoon, everyone. I am Abhishek Jain, the ACM Robotics Vice Lead, and we welcome you to the orientation of ACM Robotics. So, till now, you have seen two clubs that belongs to the software world. Now, we will be introducing you to the electronic world. So, let's begin. So, first of all, we would like to tell what does ACM Robotics Club involves. It covers the three major fields of the technical world, like robotics, IoT, and robotic process automation, which is also named as software bots. So we'll be discussing a few things about these three. Yeah, so first we begin with robotics. What is robotics? Robotics is the intersection of science, engineering, and technology that produces machine called robots that substitute for human actions. Robots have become a subject of great interest nowadays. It was, is, and will remain to be a trending topic of any era. It is an evergreen field of electronics. In our imagination, a robot is a machine that looks and acts like a human being. Robots are in fact defined as man-made mechanical devices that can move themselves, whose motion must be modeled, planned, sensed, actuated, and controlled, and whose emotions and whose motion behavior can be influenced by programming.
So we'll see the basic analogy, the comparison between humans and robots. In humans, the input is given by the sense organs like ear, nose, touch, whereas in robots, the input is given through various sensors like photodiode, photoresistor, humidity sensor, temperature sensor, etc. And in humans, the processing of data takes place in human being, whereas in robots, it takes place in microcontroller and microprocessors. In human, the output is given through hands, legs, and mouth, etc. Whereas in robot, the output is given through actuators like servo motor, buzzer, LED, etc. In humans, the structure is composed of bones, whereas in robot, the structure is made up of mechanical, metallic, wooden, steel, material structures. In humans, the energy is given through foods, whereas in robot, the energy is supplied through AC and DC supply. Yeah, so you might have heard a lot about Arduino. Like in the electronics sector, the Arduino is like the god of any project. So what is Arduino actually? Arduino is an open source hardware software company and user community that designs and manufactures single board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices. Some of the popular projects of Arduino are Arduino Uno, Nano, and Mega. So we come to the question: why is it so popular? Why everyone use Arduino for developing their projects? So the simple reason behind this is because it provides a very easy prototype for a person like a novice to build complex robotic system by further attaching additional components and modules and programming it depending upon the function that the system is going to serve. So here you can see the three of the projects like Arduino Uno, Arduino Nano, and Arduino Mega. Yeah, so this is another fascinating field of electronic which is emerging day by day. Internet of Things. So what is Internet of Things? The Internet of Things refers to a system of interrelated internet connected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network without human intervention. I would like to focus on this. Without human intervention, it creates a wireless network. In simple words, Internet of Things is an ecosystem of connected physical objects that are accessible through the internet. It is also referred to as machine to machine or Internet of Everything. IoT is emerging as the fastest growing sector in the electronic field day by day and decade by decade. It aids the life of human being by automating and interconnecting the devices. Some of the popular uses which we see in daily life of Internet of Things are smart devices like Alexa, health devices like pacemaker, which is also known as artificial heart, and smartwatches, etc. So here is a brief introduction to the structure and working of IoT. It basically comprises of 4 stages: sensor and actuators. Sensor is for input and actuator is for output. Data acquisition system, which comprises of aggregation of data, that is collecting data and converting it into digital streams. Since our microcontrollers understand only digital language, so it needs to be converted into digital streams. The third stage is edge analysis. That is, the data which is aggregated and collected needs to be analyzed before it is stored. Now, the fourth stage is comprised of cloud analysis. Cloud analysis is something like storing data on internet. Basically, the data which is collected through IoT is generally stored on clouds, so they need to be further analyzed, and that comprises of the stage 4. Here you can see the stages. Now, this is just a basic structure how the IoT network looks like. This section comprises of the internet where web servers and internet service providers work. And this is the home network where there is a firewall, there is a home router which distributes the IP addresses. And this is just like a normal device like a laptop or any mobile device. And this is our IoT device. Here you can see the IoT device is also allotted a IP address, separate IP address. So it acts like a separate device which is connected to internet. Yeah, there are several real-world applications of IoT, out of which I have listed few. The smartphones. Here you can see various devices which are connected to internet, smart variables, smart vehicles, and application of IoT in farming. It aids the life of farmers and help them to aid their production. Yeah, so future landscape of IoT job opportunities and growing market. As you can see in the stats, in 2015 there were about 15.41 billion IoT devices, and it is expected to reach about 75.44 billion devices in 2025. So you can see how much the scope of IoT can be in the coming generations. In fact, according to the Fortune Business Insight, the global Internet of
things market was valued at $190 billion in 2018, and it is projected to reach 1,102.6 billion US dollar by 2026. In fact, the investment in IoT technology are projected to grow at 13.6% year per year through 2020. So here we end the first two sections of ACM Robotics, and I would like to request Saurav Arya, the lead of ACM Robotics, to carry forward the orientation. Good afternoon, everyone. Myself, Saurav Arya. I am third year student of USICT, and thank you for Abhishek. Now, I will tell you about the robotic process automation, which is called the RPA. And what is RPA? RPA stands for the robotic process automation. It consists of three stages. First is robot, second is process, and third is automation. Now, RP stands for the mimicking the human actions to perform a sequence of steps leading to a meaningful end result. This is called the RPA. Okay. RP is like a software bots, as you can know about the Telegram bots. Now, next question is why RPA? RPA is so much popular, and the RPA developers are high salary developers. In the past 6 months, during the lockdown, RPA was growing so much. As you can see in the slides, for the fresher developer, you can earn about 6 lakhs to 8 lakhs per annum for the RPA developer. And second point is RP is a time saving, and all the processes are automatic. No need of humans for the processes. And third is there is no need for the any coding skill or the programming skill. It is easy to learn. And the fourth is the high security. With the RPA, passwords and other sensitive information are embedded in your RPA system. This nullifies the possibility of the data leak. And fifth point is there is a high return and low investment. It is a one-time investment of RPA with the increased return as the processes are automated, which save both time and money. And if we know about the facts, up to 80% of reduction in AHT. AHT stands for average handling time, and it is more accurate and quality. It is more cost effective. And the sixth point is less competition. RP is a need of business, but less expert in the market. There are some few companies which are expert in the RPA, that stand for robotic process automation, and up to 90% reduction in the ART. ART stands for the average resolution time. And seventh point is RPA tool provide unparalleled flexibility in the integration with any part of your computer. There is no downtime in the RPA. Software boards can work all the time, 24 hours a day for the complete year at 100% capacity. And RPA also provide the control room. The control room feature of Blue Prism RPA distributes a single work among many bots or multiple computers. Thus, your process become faster. RPA enhances the manual processes. Everything cannot be automated, but the RPA can automate the parts of your process which are repetitive in nature. There are various job opportunities in RPA. As I said, during the lockdown, many companies have used the RPA technology, RPA bots that produce the maximum benefit for them. Various domains of RPA are the banking and finance, and human resources, marketing and sales, customer relationship management, and etc. There are many companies which are recruiting the RPA developers in India also. Some are the on your screen like Accenture, Dell, Nokia, Infogain, RBS, etc. So we will be using RPA tools. There are 4 types of RPA tools. First is Blue Prism, second is UiPath,
third is automation anywhere, and fourth is OpenSpan. In the upcoming time, we will be using the Blue Prism for creating the bots, and we will do the hands-on in the later week, in the later month of this year. So thank you so much, guys. This is all from the my side for the RP, and over to you, Divyansh. Very well, Saurav and Abhishek. That was really informative. Okay, so next up we have is ACM Appetite, the Mobile Application Development Club, for those who have the inner urge to create one of their own for the benefit of the people. ACM Appetite lead Pranav and Vice lead Aniket would be able to explain better. So let's have them up here. Yeah, so hello guys, my name is Pranav Jain and I am in BTech third year CS branch, and here is with me, I'm the executive lead of ACM Appetite, and with me I have my lead, executive vice lead Aniket Sandhu, and he is in IT second year. So we are here to discuss about the mobile app development. So mobile app development is the basic part, like as we know in today's time, as we create a website, we definitely need a mobile app for that. Like mobile app development is the act or process by which mobile app is developed for mobile devices. So the basic um, agenda for it is like to make it handy, to make anything, any information handy. So step to develop app is, first we have to choose an idea on which we have to develop the mobile app, and then it is basic UI. Please go back. Aniket. Yeah. So we have to we have to do a basic idea on which we have to make a mobile app. Then we have to decide a UI. So we need a UI designer with it so that we can make our app look good in the basic UI and UX design. Thirdly, we need backend for the app like Firebase and all, which we need to implement. Then we have to test the particular app we made and then publishing it for the use of other people. Next. Yeah, so mobile app development is for students. Like we can freelance, we can make projects for the freelancers, for freelancing. We can make startups in which we can provide a mobile apps on a basic idea on which our startup is based on. So if you have projects in the mobile app development field, you can show it as a project, like basically like a mobile app on health app, like cybersecurity app. You can show that. Next. So the technologies are like mobile app development are for three types: the iOS, the Android, and the hybrid type. So in the native, in the Android, there are two. Yeah, so in the mobile Android app development, there are two languages in which we do, like we use Android Studio. So we use two languages which are Java and Kotlin. Java is the one of the most popular languages used in Android Studio, but to easy the coding part, they have introduced Kotlin as their basic language because it eases the programming part of the Android app development. Next. So in Android Studio, for the UX and UI design, we have XML, and XML markup language helps us to make beautiful app design for UIs. Next. Yeah, so in iOS, we have Swift as the programming language, in which, like in Android, we have Java and Kotlin. For iOS, we have Swift. Swift is a powerful and intuitive programming language for Mac OS, iOS, and like iPhone. We basically use this iOS apps. And for building these types of apps, we need a Mac OS laptop. Like we need Mac OS laptop to build the iOS apps.
Yeah, so my vice lead will take on after this. हेलो। हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट क्या होता है कि एक कोड लिखोगे तुम, दो ऐप्स मिलेंगे, iOS और एंड्रॉइड। नेटिव में तुम एक ही कोड लिखोगे तो एंड्रॉइड का ऐप मिलेगा या तो iOS का ऐप मिलेगा। हाइब्रिड में एक कोड से तुम्हें दो ऐप मिल जाएंगे। और इसमें ये थोड़े परफॉर्मेंस में स्लो होते हैं नेटिव से, क्योंकि मशीन कोड में रन नहीं होते ये। पर इनको डेवलपिंग टाइम इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही कोड बेस से तुम्हें दो ऐप मिल रहे हैं तो तुम्हें एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा और कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसमें ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं: फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, जैमरिन और आयोनिक। फ्लटर फ्रेमवर्क ये अभी लेटेस्ट आया, मतलब 2018 में ही स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ था फ्लटर का। गूगल इसको हैंडल करता है, ओपन सोर्स है। और इसको डेवलप करने के लिए इसमें ऐप्स डार्ट लैंग्वेज यूज़ होती है इसमें। और इसका फ़ायदा है कि एक कोड बेस से तुम्हें 5 ऐप मिल जाएंगे: एंड्रॉयड, iOS, वेब, विंडोज़ और मैक ओएस। अभी वेब वाला अभी बीटा वर्जन में है, विंडोज़ और मैक ओएस अल्फा वर्जन में, और एंड्रॉयड और iOS अभी स्टेबल में है। तो काफ़ी बढ़िया लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, गूगल मेंटेन करता है। और दूसरा रिएक्ट नेटिव है। रिएक्ट नेटिव फेसबुक कंट्रोल करता है, ओपन सोर्स है ये भी, और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ होती है इससे ऐप डेवलप करने के लिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो तुम ऐप चलाते होगे वो सब रिएक्ट नेटिव में ही डेवलप हुए हैं। व्हाट्सएप भी। जैमलिन माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, सी शार्प लैंग्वेज यूज़ होती है इसमें, पर काफ़ी बेसिक ऐप्स बनाने के लिए होता है, इतना एडवांस ऐप के लिए यूज़ नहीं किया जाता। और आयोनिक है, जिनको मतलब वेब डेवलपमेंट से अगर ऐप डेवलपमेंट में इजीली आना है उनके लिए आयोनिक है। जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML मतलब वेब कंपोनेंट्स यूज़ कर तुम एंड्रॉयड और iOS ऐप्स बना सकते हो आसानी से वेब कंपोनेंट्स यूज़ कर। परफॉर्मेंस वाइज थोड़े स्लो होते हैं हाइब्रिड ऐप्स, क्योंकि मशीन कोड में रन नहीं होता। पर फ्लटर में जब तुम कोड डार्ट में लिखते हो वही मशीन कोड में चेंज हो जाता है, तो फिर नेटिव ऐप जैसी परफॉर्मेंस आती है, थोड़ी सिमिलर। अब बैकएंड के लिए तुम्हें API बनानी पड़ेगी। अब API के लिए अब तुम Node.js से API बना सकते हो, Django, Ruby on Rails या फिर Firebase सर्वरलेस सॉल्यूशन है। इसमें क्या करते हैं कि तुम सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कंप्यूटिंग पावर मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। जितना तुम यूज़ करोगे उतने उसके हिसाब से कॉस्टिंग आएगी तुम्हारी। और ये सब में तुम API बना के उसको होस्ट कर सकते हो रूबी ऑन रेल्स, Django, Node.js, फ्लास्क, डीनो वगैरह यूज़ कर तुम कहीं पे भी मतलब होस्ट कर सकते हो, AWS, GCP वगैरह पे। और फिर उस हिसाब से तुम्हारी कॉस्टिंग आएगी, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में। फायरबेस में जितना यूज़ होएगा उस हिसाब से, जो जितने डाटा रीड्स राइट वगैरह होंगे उस हिसाब से वो सब आएगा। करियर इन ऐप डेवलपमेंट में अब तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। और यू ये तुम स्टैट्स पढ़ ही सकते हो, 89,000 से $125,000 के रेंज, ये इंटरनेट से लिया है मैंने। और थैंक यू। Thank you, Aniket. Thank you, Pranav. That was really amazing. Okay. Next one we have is our very own comparative coding club, the ACM ICPC club, for learning what exactly is comparative coding, the various data structures and algorithms out there, and most importantly, when to use which one. Now I invite the club lead Chinmay and vice lead Krishan to tell you more. Thank you, Divyansh, for such appreciable introduction. Good afternoon, guys. Myself, Chinmay Jain. I am the student of MCA second year, and my vice lead, Krishan Kant Agnihotri, he is a student of BTech IT second year. So, first of all, I would like to share my presentation with you. Hope it is visible. So, yeah, guys, club name है ACM ICPC club. So, first of all, ICPC club जब हम लिख रहे हैं तो ICPC है क्या इसमें?
So ICPC is actually the International Collegiate Programming Contest. So अभी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, तो कुछ कुछ हद तक क्लियर हो रहा है कि कोडिंग से रिलेटेड है। अभी तक हमने 4 क्लब्स के बारे में सुना ACM के, वेबिफाई है, इनोवेट, AI, रोबोटिक्स एंड एपिटाइट। इन सब क्लब्स का प्री रिक्वायर्ड होता है कोडिंग, मतलब कि अगर कोडिंग आएगी तभी तो आप आगे जाकर वेबसाइट बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, आपका कोई AI एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर रोबोटिक्स में कोई एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा जो ये क्लब है ACM ICPC क्लब, हम इनका जो इसका जो मेन मोटिव है वो है कि प्रोग्रामिंग कल्चर को स्प्रेड करना। प्रोग्रामिंग कल्चर में स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम सब करते हैं। लाइक अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तो आपने अपनी 11th-12th के अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, या फिर उसके अलावा आपने कभी कुछ, आजकल तो बहुत पॉपुलर हो रहा है हमारा व्हाइट हैट जूनियर है, चाहे वेदांतु है, तो इतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सब प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका रीजन मेन है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स बढ़ते हैं। लॉजिकल स्किल्स से मेरा मतलब है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अगर आपके सामने, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर चीज का गाइस एक लॉजिक है। अगर आपको कोई कहता है कि 5 into 4 मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो, तो उसका भी एक लॉजिक है। एक्चुअल लॉजिक हम शुरू में बचपन में याद कर लेते हैं टेबल्स कि 5 3 15, 5 4 4 20, बट 5 4 का मतलब क्या है कि 5 के अंदर 5 को 4 बार ऐड करो, 5 + 5 + 5 + 5, which actually result in 20. That's because that 5 multiplied by 4 is 20. तो हमारा गाइस मेन जो मोटिव है इस क्लब का वो ये है कि कैसे हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे हमें एक प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हमें एक लॉजिक डेवलप करना है, उस लॉजिक को डेवलप करने के बाद उसमें कैसे मैथ्स यूज हो रही है या फिर कोई और चीज यूज हो रही है, उसके बेस पे एल्गोरिथम बनाना है। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है एक स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कि हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम में एक इनपुट ले रहे हैं, उस इनपुट को किसी चीज में स्टोर करवा रहे हैं, उस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को आगे कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, भले कहीं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं या फिर किसी और लॉजिक के अंदर उस आउटपुट को भेज रहे हैं। अब एल्गोरिथम बन गया है, तो एल्गोरिथम के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमें एक इनपुट को किसी चीज में हम स्टोर करवा रहे हैं, तो स्टोर करवाने के लिए गाइस डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमें एक डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। डाटा स्ट्रक्चर इज लाइक हमारी जो सिस्टम की या फिर हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उस मेमोरी में डाटा स्ट्रक्चर का डिफाइन करना, मतलब अगर हम कोई एरे ले रहे हैं या फिर कोई वेक्टर ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पेस को अलॉट करना उस पर्टिकुलर इनपुट के। अब ये सब चीज तो ठीक है, हमने एल्गोरिथम भी बना लिया, डाटा स्ट्रक्चर भी चूज कर लिया, लेकिन हम अपनी चीज को कंप्यूटर को सिखाएंगे कैसे, उसको बताएंगे कैसे कि भाई आप इनपुट लो, आप स्टोर करो। अब उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम ये तो नहीं सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे और कंप्यूटर हमारी इंग्लिश को समझ लेगा, तो इतना भी इंटेलिजेंट मशीन हो ही नहीं है। हमें अपनी, अब हमारी मशीन पर इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर हम उसे इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो वो उस उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर करने में कैपेबल है। तो उसके लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। तो उस हिसाब से गाइस हमारे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा तरीका है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो एक नई चीज अलग आती है वो ये आती है कि हमारा कोड जो है कितना एफिशिएंट है। लाइक अभी अभी आपको जब ये एपिटाइट क्लब अपने बारे में बता रहा था कि जब हम एक हाइब्रिड ऐप बनाते हैं तो वो iOS के लिए भी चल रही है और iOS के साथ साथ एंड्रॉइड के लिए भी चल रही है, लेकिन वो स्लो हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या करता है, ऐसे स्लो प्रोसीजर्स को जो थोड़े स्लो है, जो थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए हम एक ऐसा लॉजिक सोचते हैं, ऐसा एल्गोरिथम सोचते हैं जो एक्चुअली उसको तेज कर देगा, उसकी टाइम एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और स्पेस को कम कर देगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, लेट्स सी, आप एक कंपनी में हो, कंपनी के पास आपके वो है आधार कार्ड और मोबाइल का डाटाबेस, मतलब कि हर मोबाइल नंबर के बेस पे कौन सा उसके साथ आधार कार्ड लिंक है, वो सारा डाटाबेस का इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स से 10⁹9, मतलब कि एक सिटी के अंदर 10⁹9 पीपल रहते हैं और हर जने के पास एक एक मोबाइल फोन है और हर मोबाइल फोन के कोरस्पॉन्डिंग एक आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, और आपको एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि आपको इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के लिए आधार कार्ड को नंबर फेच करना है।
तो अगर आपने जैसे 11th-12th में या फिर आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोडिंग करी है, इट्स लाइक अ सर्चिंग प्रॉब्लम कि एक डाटाबेस के अंदर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए सर्च करना है। तो अगर हम यही चीज लीनियर सर्च से करें, लीनियर सर्च क्या करता है, हमारे डाटाबेस के 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 10⁻9 - 1 इंडेक्स तक जाएगा और सर्च करता रहेगा। अगर उसको वो पर्टिकुलर की मिल गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आधार कार्ड रिटर्न कर देगा। तो अभी हमें जब एक मोबाइल नंबर के लिए आधार कार्ड को फेच करना है तो हमें मैक्स टू मैक्स 10⁻9 ऑपरेशंस लग सकते हैं। मतलब कि अगर हम हर कंपैरिजन को 10 एक एक ऑपरेशन माने तो। अब इसी के साथ-साथ हम ऐसे 10⁻9 मोबाइल नंबर्स के लिए सर्च करें, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 10⁻9 ऑपरेशन फॉर 1 एंड फॉर 10⁻9 मोबाइल नंबर इट विल बी 10⁻9 into 10⁻9 व्हिच विल एक्चुअली रिजल्ट इन 10⁻18। हमारा सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि वो 1 सेकंड के अंदर इतने सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। जो अभी तक के बेस्ट टू बेस्ट कंप्यूटर डेवलप हुए हैं, वो एक मैं आई थिंक 1 सेकंड में 10⁻9 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट 10⁻18 गाइस इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर मैं इसको इन ईयर्स में बताऊं तो इट विल एक्चुअली टेक 31 ईयर्स टू कंप्यूट दोज ऑपरेशंस। अब इसी का एक अगर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोचेगा? उसे पता है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो सॉर्ट किए जा सकते हैं। सॉर्ट करने के बाद मेरा मतलब है कि लाइक अगर आप आधार कार्ड के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो या फिर मोबाइल नंबर के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो, तो जो मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर हुआ है उसको ऊपर रखते हैं और जो बाद में रजिस्टर होते हैं उसको नीचे रख लेते हैं। सिंपल। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि एक ऐसा लॉजिक बनाओ जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो कम। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, अभी जैसे हमने बताया कि अगर 10⁻9 रिकॉर्ड्स को सर्च करना है तो हमें 31 ईयर्स रखने हैं। तो इसकी जगह अगर हम सोचे जाए लीनियर सर्च की जगह अगर हम बाइनरी सर्च लगाए, बाइनरी सर्च क्या करता है? बाइनरी सर्च हर बार हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके आइदर लेफ्ट हाफ में सर्च करता है या राइट हाफ में सर्च करता है। तो उसकी वजह से उसका जो रन टाइम होता है वो लॉग लॉग टाइम से रिड्यूस हो जाता है। जहाँ अभी हम 10⁻18 ऑपरेशन कर रहे थे, अब हम कर रहे होंगे लॉग 10⁻9 और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल रफली रिजल्ट इन फ्यू आई थिंक 30 to 40 सेकेंड्स। कहाँ हम एक बारी में 31 ईयर्स का सोच रहे थे और कहाँ हम 30 सेकेंड्स या फिर 40 सेकेंड्स पर आ गए। दैट वर एक्चुअली द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर थिंक लाइक। तो ये क्लब जो है ऐसी चीजों को प्रमोट करता है, ऐसी चीजों पे आपको सोचने पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देगा जिसको आपको सोचना ऐसा पड़े कि भाई आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट कोड बचे। अब थोड़ा सा आईसीपीसी जो हमारा ये कॉन्टेस्ट होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब कि हमें इस चीज को करने की जरूरत क्या है कि हम इतने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करें? तो गाइस आईसीपीसी जो हमारा है एक एक तरह से ओलंपिक्स है प्रोग्रामिंग कंपटीशन का, जिसमें आप ग्लोबल लेवल पे जाके compete करते हो अलग अलग प्रोग्रामर्स के साथ। इसके जो रीजनल्स होते हैं, मतलब कि अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो वो कोड शेफ कंडक्ट करवाता है। और कोड शेफ, अभी कोड शेफ क्या है उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। और उसके रीजनल के बाद इसके फाइनल्स होते हैं। सो अब कोड शेफ के बारे में जैसे मैंने बात करी, तो कोड शेफ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देता है या फिर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस करवाता है जिससे आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स को एनहांस कर सकें। कोडशेफ के अलावा और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक कोड फोर्सेस है, हैकर रैंक है, टॉपर टॉप कोडर है, लीड कोड है, हैकर अर्थ है, गीक फॉर गीक है, बहुत पॉपुलर है गीक फॉर गीक। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके अलावा कई आईसीपीसी के अलावा भी कुछ और कॉन्टेस्ट है, जो गूगल की किक स्टार्ट है, कोड जैम है, फेसबुक का हैकर कप है, स्नैकडाउन है, टॉप कोडर का ओपन है और माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप है। सबके बेनिफिट्स आपकी स्क्रीन पे आई थिंक विजिबल है कि किक स्टार्ट से तो डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाती है गूगल से। गूगल मेरे ख्याल से काफी, आप सब में से काफी लोगों की ड्रीम जॉब होगी। और फेसबुक हैकर आपका आप देख रहे हो $10,000 है। सो ये तो थोड़ा वो हो गया कि हम ग्रीड वाली बात हो गई है। अब एक्चुअली में इन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बताया क्या रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड यही है कि एल्गोरिथमिक स्किल्स डेवलप करनी है, डाटा स्ट्रक्चर कौन सा कब यूज करना है। लाइक जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लीनियर सर्च की अगर हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं तो कितना टाइम रिड्यूस कर दिया। मैथमेटिक्स रीजनिंग चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स में अगर मैं प्रिसाइजली मेंशन करूं तो कब हमें डायनेमिक
चीजें यूज करनी है, कब हमें स्टैटिक चीजें यूज करनी है, वो वाली चीजें आ सकती है। कब कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है उसका भी एक टाइम पर फर्क पड़ता है। उसके बारे में हम आपको आगे वाले होने वाले हमारे आईसीपीसी क्लब सेशंस में और इन्फॉर्मेशन देंगे। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पे जब compete कर रहे हो तो हो सकता है आपको भी उसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो और दूसरे को भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो, लेकिन आप कितनी जल्दी और कितने कम अटेम्प्ट में उसको सबमिट कर पा रहे हो, वहां पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सेम विद स्पीड, कि कौन पहले एक्चुअल में उस कोड का सोल्यूशन सबमिट कर पा रहा है प्रॉब्लम का। सो मेन क्वेश्चन जो है कि अभी से वाईसीपी, अभी से सीपी क्यों, अभी से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों? गाइस कुछ अभी बिल्कुल ग्रेजुएशन में कुछ कुछ ने कदम रखा है, कुछ सेकंड ईयर है, कुछ थर्ड ईयर है, तो टारगेटिंग द ओवरऑल ऑडियंस फॉर दिस क्लब। तो सबसे पहली बात, आजकल का जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है उसमें 85 to 90% कंपनीज अपना एक राउंड रखती है, कोडिंग राउंड। तो कोडिंग राउंड के अंदर शार्प कोडिंग स्किल्स सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में आता है, और खासकर टायर ए कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, दे रिक्वायर्ड योर हाई कोडिंग स्किल्स। और वो आपको सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स को सिर्फ रन करने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग सिर्फ कोडिंग स्किल से ज्यादा, मतलब कि लॉजिकल स्किल्स का टेस्ट हो। उसके साथ साथ गाइस, जब आप एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आपको वो चीज रिलेटेबल लगने लगती है। तो वो आपको एक एज अ वॉरियर हूँ या मैं फाइटर बनाऊँ, तो अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके साथ आपको बेटर प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपकी सोचने का तरीका बदलता है, एक चीज को देखने का तरीका बदलता है। ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बहुत इजीली और बहुत अच्छे से डेवलप होती है। एक टीम वर्क में कैसे करना है, एक प्रेशर के अंदर कैसे काम करना है, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर, डेडलाइन के अंदर कैसे चीजों को सबमिट करना है, कितनी बेटर एक्यूरेसी रखनी है, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और जैसे ही मैंने शुरू में कहा था, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, मशीन लर्निंग हो, हर चीज में आपको एल्गोरिथम तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो एल्गोरिथम कैसे बनता है, कितना एफिशिएंट बनता है, वो चीजें आपको पता है कोडिंग स्किल से बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। इसके अलावा गाइज, ये कुछ रेफरेंसेज है जिसको आप यूज कर सकते हो अभी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। चाहे वो ये कोचर है, कोड फोर्सेस, स्पीक फॉर वीक्स, हैकरैंक, माइट कोड स्कूल ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पे गाइस ओशियन है एक तरह से, मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो नहीं कहूंगा, स्पेशली मेंशन करूंगा डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स का ओशियन भरा हुआ है। ओशियन में जैसे पानी कभी खत्म नहीं होता, वैसे यूट्यूब पे डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की वीडियोस कभी खत्म नहीं हो सकती। और गाइस गिटहब पे आपको बहुत सारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिसर्च पेपर्स भी मिल सकते हैं। इवन एसीएम हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें भी काफी सारे रिसर्च पेपर है एल्गोरिथम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। जरूर उसको एक बार आप गो थ्रू करिए, और उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना जरूर, बहुत प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इवन तो अगर आप हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ दिन बाद, क्योंकि लॉजिक है ना, लॉजिक हर टाइम सेम नहीं रहता, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो उसके बेसिस पर आपका लॉजिक डिफर करता है। तो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की। तो अभी के लिए गाइस इतना ही है। उसके बाद आपके साथ और जैसे जैसे सेशंस होते रहेंगे, हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और बेटर हम जान पाएंगे। थैंक यू दिव्यांश। Thank you, Chinmay. That was one hell of an explanation. Okay, so next one is, okay, who wants to be an entrepreneur here in the future? Anyone? Yeah, I guess everyone would be really intrigued by the term startups, no? Okay, we have a club for that here as well. That's ACM Entrepreneurs Arena, and we have leads and vice leads of the club here. Let's hear up from Himanshu and Ragini here. Himanshu and I, we have prepared a presentation for Entrepreneurs Arena ACM USICT. So let me share my screen and I'll walk you over the, Himanshu and I will walk you over the slides. Is my screen visible?
Is my screen visible? So the presentation, it's mainly divided into 4 segments. We'll be explaining what entrepreneurship is, the skill sets required for a successful entrepreneur, the activities which us as a club can come together and perform to make you guys more fit for entrepreneurship, and this startups from our college. Hello everyone, I'm Himanshu. I'm from BTech EC second year, and I'll be delivering the speech with Ragini today. And now let's begin with what is entrepreneurship, or just say what is an entrepreneur actually. So suppose if we have a problem in front of us and everyone is just ignoring it, but just that one person, he or she decides that yes, this needs to be changed. It can be done in a better manner, and he doesn't give up his will and solves the problem and bring the bring ease in people's life. That we can call as an entrepreneur. Now if we look in life of every successful entrepreneur, we see that they have developed their various skill set regarding the work they were doing, but we can have few common points regarding that, and we'll tell you about them now. So, majorly, the skill set required for a person to become a successful entrepreneur is an appetite for risk, time management, strategic thinking, finance, marketing. And the soft skills very important. So, we'll discuss them separately in the further slides. But the above qualities, if I take an example of Mark Zuckerberg, even before he created a Facebook, he made lots of applications which did not, they weren't successful, and you have to take that risk. And you need to, there is always a risk factor, but you need to stay consistent. You need to be passionate about the problem which you want to solve. And importantly, finance is a major factor because in startups, a lot of funding is required. And you go to incubation centers for this funding. It's not very easily available. So a lot of management comes into the sector. But apart from these, the soft skills required will be explained by Himanshu. Can you please change the slide? So yeah, we have decided to keep this group an interactive one, and we'll be giving you the WhatsApp link to join it further. We have decided to do various activities together so that we just don't cram things up, we implement them. So we'll shift our priority basically to soft skills, just not saying you are going to be an entrepreneur or even if you're seeking jobs. I personally feel that soft skills matter the most. How you communicate with people, how you talk to them, how you listen, how you plan your everyday out, that matters the most. You will learn your skill, that would be in case web development, app development. But the most important thing, according to me, would be if you work on your soft skills. So if we talk about communication, you know how to talk to people, you and networking, how big your network is and how efficient it is. And in any problem, you need to have leadership quality so that you manage your team around, you don't fall in, so and you can get up. And the most important is negotiation. We ignore this sometimes, but if you know how to successfully negotiate, you can definitely do well in your business. And to implement this, we have decided that we'll keep various group discussion activities. You will observe that when you will be taking part in that, you will see your personality improving overall. And we'll be organizing more competitions. Can you shift to the next slide? So we'll conduct series of competitions, majorly case studies, quiz competitions, ideations. So in this competition, say in a case study competition, you'll be given a problem statement, the various solutions of it, and
what solution do you think would be the best for that particular situation? And in this, usually in the problem statements, you have to consider a lot of you'll have to consider the laws of that country, with what social and religious impact it will do. So as an entrepreneur, you have to consider all these things. And a very conflicting, it might be supported to one group, but it might be conflicting towards the other group, and you have to take all these risks in account. So that those competitions case studies will be conducted. Quiz competition would be basically the knowledge about your business domains, and how easily you can in certain situation you can see, अच्छा ठीक है, इस कंपनी के साथ ये हुआ था तो उसने क्या करा, something in that sort. In ideation, yes, so for a startup you don't need to have your own ideas, something new that you're doing. So ideation competitions will be held, which will make you think out of the box. So the startup culture in our college, it has been increasing rapidly. And in the next slide, we have listed the recently established startups of our college. We have NCV, which fourth year students have done. Codes Black, it is basically doing search engine optimization, digital marketing, website and app development. And Inverted is another startup from our college, which is doing eKYC and video KYC. Thank you. For enlightening us with those wonderful presentation. Okay, now next we have is the ACM. The next club of the ACM USICT Student Chapter 2020-21 is the ACM Cyber Cell. Cybersecurity is pretty cool as well as a basic necessity these days at the same time, isn't it? Okay, let's have ACM Cyber Cell lead Anugrah and vice lead Unnat to now enlighten us more on this topic. Thank you, Divyansh. And I'll present my screen. Yeah, is my screen visible? Okay. So, a very good evening to all the freshers who are attending this orientation program. And I know a lot of you would have been overwhelmed with such a great clubs. Since it is an orientation program, I want you to introduce you to cybersecurity, not by loading with complicated terms. So I introduce you to ACM Cyber Cell. I am the lead of this club, and Unnat is the vice lead. Since cybersecurity is going to be the future of tomorrow, and with this growing urbanization and digitalization and creation of smart cities, everything is going to be connected with the internet, with the integration of IoT devices. And if something is connected to the internet, it is damn vulnerable if it is not properly installed or patched. With this concern in mind, we must think something to secure it and play it safe. One small vulnerability can lead to big disasters, as most of you might have seen the great Twitter hack of 2020, where the Twitter accounts of eminent personalities such as Bill Gates, Elon Musk, etc. were hacked, and huge transfer of bitcoins were made within few minutes of the hack. Now, since we are going to be connected in future, I would like to introduce myself. My name is Anugrah, and I am a BTech ECE third year student. And formerly, I have worked with cyber cells of Noida Police and Gurugram Police, respectively, as an intern. I've got a few Hall of Fames by Domino's, Internshala, Cybrary, Vimeo, and I've earned a maximum bounty of $500. And lastly, I've worked a lot of cyber projects to reduce cyber crime on human trafficking, etc., with some of the agencies and also government agencies.
So now let me just introduce you to cybersecurity. Cybersecurity is the practice of defending computer, server, mobile devices, etc. Blah blah blah. This is just a bookish definition. I don't believe in, understanding and uh, learning bookish definition. So I decided to narrate a short story to you, uh, so that I can relate cybersecurity with real life, as relating things with real life helps us understand the importance of something. So now let me just illustrate this story. Hope you all will enjoy it. Now you would be seeing a map of a house on your screen. Uh, the house has walls, doors, windows, and with the yellow you can see family members of the house. These family members, they plan a vacation, and they all plan a vacation and move out for about 3 to 4 days, and they have locked all the doors, and they leave. Now what happens? Uh, a thief tries to enter into the house and looks for some entry point to steal some stuff. The thief would come here, and first of all he would try to, open the main lock of the door, but he could not open the main lock of the door, since it was quite strong. Now the thief started to move around the house, and his next step was climbing up the balcony and trying to get in. But since balcony was also locked, he couldn't get in. Now the thief tries to move around the house, and he suddenly uh, uh, got a view of a window which had only one small glass. So he took one stone from the ground and threw it on the window. This was, a golden opportunity for the thief to get into the house, and he broke the window, came into the house, moved to the locker room, and where the almirah was placed, he opened the almirah, and also almirah was, it was not locked. So uh, he took all of the money and everything, and he left. Now what happens? The family comes after the vacation, and they were really shocked to see that robbery had happened despite being such a strong lock. And so they, on the next day, they all decided to call the security professionals to basically examine how all that happened, and to make sure that it doesn't happen again. The green symbol you can see here, they are the security professional, and the job of a security professional is basically nothing but to act like a thief, and in the end do it for a good intent. Like, a security professional would basically act in the same way like a thief would do. He would come around at the main door, try try to break the lock, and then also try to climb the balcony and then see. But uh, but in the end, a security professional will basically create a report of the type of all the type of vulnerabilities that basically exist in the house. Like, the glass window must also have a grill present, so that it would be a double protection. Also, the almirah wasn't should not be locked. It must have a digital lock present, such type of. And he would basically give all these recommendations to the family so that they can secure their house. Now I hope you'll all will like the security, and I hope you'll all like the story. Now I would like to imagine this house as a website or a cloud, where the money or etc., it can be referred to as a data. So secure basically family members are the users of those websites or cloud, and security professionals here, here, which are indicated in green color, they are basically white hat hackers. And don't be confused, I'll tell you what are white hat hackers. I know most of you are totally new to this field, and cyber security is really going to be the future. And I'll tell you more things. These are the fields in cybersecurity. In cybersecurity, we have forensics. Forensics is basically uh, retrieval of data from like hard disk, computers, etc. Like, whenever a crime scene happens, what do security agencies do? They carry security experts with them, who are basically forensic experts, who basically retrieve all of the chats and chats from the mobile devices, all the
photographs, pictures from laptops or whatever electronic devices are present at the crime scene. Now we have cryptography. Cryptography is basically used for secure exchange of data between two parties. Cryptography is a really interesting thing if you would explore it in detail. Then we have application security. Now we have two types of application. These are web applications and basically Android or iOS applications. We can do pen testing on them. And lastly, penetration testing is basically like we have network penetration testing, where we basically test the network security of an organization, like switches, routers, everything is securely installed and no one can break into or intercept the data in between. uh, then we have malware and spyware analysis. Most of you, uh, you would have known about the Pegasus malware that was recently released by the Israeli hackers. It was such a vulnerable malware. Someone would just send you a pic on WhatsApp, and you won't believe that your phone's complete remote access would be with the hacker by just sending one small image on WhatsApp. See, so malware analysis and malware coding, they have huge, very huge scope in future. So now, what do you think is the best part about cybersecurity? These are some of my views, which I would like to tell. You get paid to find the mistakes of other developer. I mean, what could be more? What could be much more interesting than that? That you are getting paid to find the mistakes of other people. What the other developers have done in making their websites or something like machine learning model or etc. One small vulnerability can basically lead to such big disaster, as you saw in the Twitter hack. Also, you basically learn to do secure things. You basically learn to do secure coding so that your code can only be modified by you and no one else. And you have an increased innovation. You basically, hackers are tend to be of great mind. They can think beyond the limits, etc. And basically, cybersecurity can be integrated with all branches like robotics, hardware security, etc. And lastly, it is a lot of fun. So now, I told you, I'll tell you about hackers who are white hat hackers, black hat hackers. Let me just start it by telling who are hackers. Hackers are basically really smart people. They are basically an champion in all of the fields, from coding to social engineering to cryptography to almost everything. Uh, Originally, hackers simply meant advanced computer technology enthusiast, both in hardware and software, and someone who is able to subvert computer security. Uh, if doing this for malicious purpose, then that person can also be called as a cracker or a black hat hacker. So a person who basically tries to hack into other systems or etc., like for stealing the data and selling it on other forums like dark web, etc., those type of hackers are basically black hat hackers, and they are at serious risk. Police and security agencies are all after them. So it is not a good job to be a black hat hacker, but instead you can this is another third type of three-way classification of hackers between black hat hackers, gray hat, and white hat. White hat are basically the smart ones who are really smart, and they hack for a good intent. Like if you hack and report some bug to some company, they reward you some bounty in dollars or bitcoins or something like that. And you can get a job if you try to hack a website or something. The company might get impressed and etc. Like most of you have also seen, like Elon Musk, he has launched his new car Tesla, and he has basically given a statement that if anyone is able to hack his car Tesla by any means, he'll give that car for free or basically hire him. And so you have tremendous amount of opportunities in cybersecurity. Now we move to the impact of cyber crimes. Which are the causes done by black hat hackers. A lack of focus on cybersecurity can damage business in range of ways. Like we
like the Twitter hack was done, Twitter had so much. Uh, Twitter had to face so much of reputation issues and regulatory cost and economic cost. Uh, a lot of, I mean, image of Twitter was damaged with that Twitter hack, that anyone can hack Twitter and something just like that. Uh, these are some of the recent cyber attacks which I think I should share you, so that you might generate an interest in cybersecurity and learn to secure things. Twitter hack, this I have already tell you. Last week Google was down for about 2 to 3 about 2 hours. Google officially made a statement stating that uh, it was their actual upgrade, but I don't think so, because it would have caused them huge millions of dollars of loss if they would have. They are just basically trying to hide their mistake, that it was hacked. Now we have a Zoom breach. uh, Zoom's almost 500,000 stolen Zoom password was available for sale on dark web crime. So also there are a lot of suspicious activities going on dark web. So basically we need more of cyber awareness and cyber security, so we can reduce cyber crime. Also there are endless opportunities. You can work with government agencies, CBI, etc. uh, uh, and now let's talk about whatever skills are required. In my opinion, just the desire to learn and hardworking nature is required to achieve your goals and in cybersecurity. And we are always there for your support. If you, I mean, want to do any project with us or anything, we are always there for support and listening to you. And let's talk about some of the certifications which are really common in cybersecurity. One is CEH. It is by EC Council. It is, the preliminary certification that almost every private company looks for. Then we have OSCP. This is offensive security. Then we have AWAE and EJPT. In the upcoming sessions, we can brief you about all these certifications and are they beneficial for you or not. These are some of the future activities that we plan to conduct. We would plan to conduct a CTF competition, talk events with guest speakers, and live hands-on. We can show you live hacking or share our bugs, POC, etc. And basically, it is a really interesting field, and I would like to join almost all of you to Cyber Club, and I'm there to guide you. And we have Unnat, who is my uh, who is my he's Vice in lead. first year CSE, second year CSE, sorry. Second. And these are my contacts. If you need any help, I'm there to help you. Thank you. Thank you, Anugrah. That was a really pretty interesting story. And guys, I think you should remember the most recent example, NCB. NCB was extracting the chats of these celebrities, right? So who were these people? These were the ones. These type of people were there. Okay. So next club that we have is ACM Research Club, and I think the name itself says pretty much it. I now invite the ACM Research Lead and Vice Lead, Prateek and Anush, to tell us more about the club. Okay, hello everyone. I'm Prateek Thakur. Currently in MTech first year, and I'm the executive lead for research and development, along with Anuj, who is currently in BTech third year. Okay, so let me share my screen. Is it visible? Okay, great. So guys, research and development cell, right? You know what? Before starting this, even if while starting this, I just want to too much technical knowledge you have been given. Okay, and I just want to bring down this conference to our level. You know, the first year's level, not even second year or third year, the first year level. The reason is that most of the people are not interested in research. Nobody, you know, there are very low selections in research. No one really wants to come in research, and because first of all, uh,
yeah, you get a job, you go to BTech, you do your degree, you sit on the placement, you get a job, and that's it, work done, right? Why should you go further? लाइफ सेटल हो जाती है और ऑलरेडी लाइफ इतनी मुश्किल हो रखी होती है वहां तक कि कैसे बता. So also secondly, if I am like, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ and I'm not able to relate with you, then what's the point of me giving this presentation? मुझे expect नहीं करना चाहिए कि आप मेरी बात समझोगे. So we're gonna start with why do you want to do research? Okay, so research में अब ऐसा है कि research के benefits होते हैं काफी सारे. We can start with like it strengthens your critical thinking skills and analytical skills. Okay, so अभी क्या है कि first years यहाँ पे बहुत होंगे, right? Second year and third years भी सुन लो that you were in your school, 12th class अभी पास की है, बोर्ड एग्जाम्स देकर आए हैं, IIT JEE की कोचिंग लगाई होगी सबने, 2-2 लाख रुपए दिए होंगे, and even after that आधे तो सिर्फ इसी दुख में बैठे होंगे कि यार USICT आ गया, IIT क्यों नहीं मिला, IIT दिल्ली मिल सकता था या फिर NIT किसी को मिल सकता था दिल्ली. एंड व्हाट्स गोना हैपन इज कि आधे लोग तो इसी रिग्रेट में पूरी बीटेक निकालेंगे दैट इस कॉलेज में क्यों और कहीं क्यों नहीं, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं है, दिस कॉलेज इज ऑल्सो बेटर, क्योंकि जहां आ गए हो वहां आ गए हो, राइट? यू शुड लिव योर लाइफ कंप्लीटली. इस रिग्रेट में अपने 4 साल मत वेस्ट करना अगले के. Okay, so now with the starting of the research first of all strengthens the critical thinking skills and analytical skills. That means ये जो research वाला जो cell है ना, we are not gonna focus on cracking. आज तक आप लोगों ने you have just focused on cracking, you know, IDJ crack करना है और KVPY crack करना है and आगे जाओगे तो IAS crack करना है, सब एग्जाम्स को क्रैक करने में लगे रहोगे. Research and development basically focuses on mastering it. Okay, we don't care about cracking, क्योंकि cracking में competition होता है, research and development में कोई competition नहीं होता कभी भी. Because of course, अगर आप लोग सोनू निगम को खड़ा कर दो जस्टिन बीबर के सामने and now you start comparing each other's voices, so you cannot compare them, right? Research fields cannot be compared. आप किसी biology या आप किसी botanist को या फिर न्यूरोबायोलॉजिस्ट को किसी फिजिसिस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते. सिमिलरली यू कैन नॉट कंपेयर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट टू अ मैकेनिक टू अ कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियर. Okay, secondly, you will get of course the opportunity to publish if you are good enough. We can of course take you for our term papers. हमारे पास भी बहुत सारे term papers होते हैं. In fact, every semester we have to give a term paper, and you are good. If you are good enough, you are most welcome to work for it. Now, okay, you are in the campus, but you know most of the things, even your just seniors होंगे ना, third year and fourth year, वो भी इतना ज़्यादा close नहीं होंगे teachers के जितने masters के students होते हैं, right? Or even PhD students. So you get to know what they actually are, what they have done in their lives, okay, who they are, and whom you can ask for help to. ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि who all these teachers are and what they have done in their lives. तुम लोग इनके H indexes देखोगे तो H index देखोगे तो हैरान हो जाओगे. H index होता है कि that ranks scientists based on their publications. Okay, so of course you get in touch with us. We will get you to meet other mentors और researchers. So जितने भी है मेरे colleagues हैं उनसे मिल सकते हो तुम लोग, मेरे teachers हैं उनसे मिल सकते हो, कोई problem नहीं है उसमें, right? You can enter into the master's field. देखो क्या है यहाँ पर, करना क्या है तुमको. At least you should like, अगर तुम दूर से देख के कह दोगे कि I'm not interested because you know just R&D is a boring subject or it's just too much studies. तो ऐसा नहीं है, आप एक बार आके देखो, you see what it is, how it is. अगर if you don't like it, you can always leave, right? We don't have any competition in this field. Like यहाँ पे कुछ competition नहीं होता. If you want, like if you are super competitive, you can go for ICPC. If you like, तुम्हें वो आग जो है अंदर से वो सिर्फ ICPC से ही मिलती, competition से मिलती है, so you can definitely go for. We have all other fields also, right? Although I would not like इतना ज़्यादा suggest नहीं करूँगा boost resume, but yeah, this is the reward for research.
इफ यू रिसर्च तो आपका रेज्यूमे एकदम सॉलिड हो जाता है, क्योंकि first of all you're extremely into this you are mastering the study. Okay, it's not about just one subject, it's not about just machine learning, it's not about would be or web development or any coding language, it's about mastering the entire concept. Okay, once you master the entire concept, the confidence that you get will eventually get you through all the interviews. You don't have to even worry about will I get through this or not, that you will be thinking if they don't select me then that's their loss, not yours. Second, okay, now this, of course, people who want to like study further, like most of you people have must be having an ambition to go for abroad studies and for a postgraduate programs. If you want to do that, you can do that here as well, because वो लोग like resumes के लिए GRE का paper अगर आप लोगों को clear करना है, so they will be looking at your postgraduate papers if you have published anything. If you have, then well and good. तुम्हारा selection और easy हो जाएगा. That's it. Okay, now this is interesting. How to know if you fit in research? कैसे पता लगाओगे कि आप लोग रिसर्च के लायक हो या फिर आप लोग फिट करते हो रिसर्च? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लायक होता है या नहीं होता है, लेकिन it's just based on the interest. And इससे आपको now research is something, first of all, it's not just technical research, it's a cumulative of everything. जो भी अभी आज presentations हुई है ना, उन सबका cumulative है research. Okay, and not just the presentation that you have seen, but everything in life also. काफी चीजें हैं आपको. I don't know if you get it or if you will understand this in the first year or not, but in the age that you are in right now, it's extremely vulnerable. Okay, काफी vulnerable है, काफी failures and you know अभी तो लाइफ शुरुआत ही हुई है. आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा बीटेक खत्म कब होगी. They must be in the 4th years and चले जा रहे हैं. बाकी लोग, कुछ लोग शुरू अपना सोसाइटीज ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अपना डांस वगैरह. बट दिस इज एन एक्सट्रीमली वल्नरेबल एज, एंड इस एज में यू नीड अ राइट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन इन अ करियर सेंस. करियर सेंस में डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इन लाइफ. यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ. और वो डायरेक्शन देने के लिए ऑफ कोर्स आपके सीनियर्स होते हैं, राइट? सीनियर्स जो लाइक हु आर लाइक टीचर्स, नॉट सीनियर्स. पता चले कोई ले गया आपको, चल यार आज पीते हैं, तेरे को पिलाते हैं. ठीक है. So, okay, now how will you know if you fit in research or not? So first point is, do you think coding something makes you look cool and impress others? If you think that, then I'm sorry, you're not fit for research. Why? Because first of all, research में coding का हम लोग use कम करते हैं, क्योंकि हम लोग ना coding level से ऊपर उठ चुके होते हैं. You know, I've done everything. जो भी आप लोग अभी कर रहे होगे, या you would be thinking जो first year पे होंगे, would be thinking something really cool enough to work in. I have already done that. Okay, I've worked for clients. I've worked in a job for 2 years. Like मेरे पास फिर Amazon का भी package था. I even left that. और अभी कोरोना हो गया. That's why like I lagged in the exam. Otherwise, I would have gotten something. I would have gotten somewhere else. But किस्मत वापस ले आई यहाँ पर. Anyway, so I've done all of that, and trust me, अभी आपको लग रहा होगा, you know, the mean stack and Android development and iOS development and you know, like Angular Strap, Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, इतने तो Straps versions बन चुके होंगे. वो सब आपको बहुत you must be thinking that's really cool, but for us it's just tools. You know, we are in a carpentry shop. एक saw रखिए, there is a hammer, there is a saw, there is a like this wheel, and you just have to use them to make things of our own. Okay, we basically focus on concepts, we don't focus on the tools. अगर आपके concepts clear है, you are well and good. बहुत अच्छे हो, तुम लोग आ सकते हो. If you just want to do coding, तुमको coding में interest है, and coding वाले अच्छे होते हैं exactly, लेकिन this is more of an innovative field. Okay, right. Do you live to win? क्या आप जीतने के लिए जीते हो? क्या आपको अंदर मतलब आग जो है वो आपकी सिर्फ जीतने से आती है, कि जब तक फर्स्ट प्राइज ना मिले ना तब तक मजा नहीं आता. So you're not fit for this. Why? Because यहाँ पे कोई जीता नहीं है. There is no one to win. यहाँ पे आइडियाज होते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए होता है,
आपको पढ़ने को बहुत ज्यादा मिलेगा, बिकॉज इफ यू डोंट मास्टर द थिंग, राइट, अगर अगर मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको एडिशन नहीं आता है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, राइट? सो if you have to master the thing, you have to be completely amazing in your basics. उसके बाद आप मास्टर्स आप आगे कर सकते हो, एंड यहाँ पे कंपटीशन नहीं है एग्जैक्टली। अगर आप जीतने के लिए जीते हो तो यहाँ पे बताना, देयर इज नो कंपटीशन इन दिस फील्ड। सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है, बट वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है आपको, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। डू यू लाइक टू बी अ नो इट ऑल? क्या आप सब जानते हैं? यू नो, होते काफी लोग who are also known as the know it all or Google of the class. Then also this is not a place for you, because if you consider yourself a know it all, then the first thing that you don't know is that you do know it all. Do not know it all. Okay, so that's a kind of an life value. 10 vices agar aap padhoge na, so that's kind of a life value. If you know this, then if you are not in one of them, then you're most welcome. Okay, now do you have an unmendable future plan, or do you like to live in tomorrow? अगर आपको कल में जीने की आदत है कि कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल क्या करना है, एंड यू डोंट लाइक केयर कि आज क्या करना है, उसकी परवाह नहीं है। जैसे 12th क्लास में 11th में शुरू हुए थे ना कि IIT JEE की कोचिंग ले लेते हैं, एंड देन स्टार्ट विद IIT JEE प्रिपरेशन, और दिमाग में चल रहा है हाँ हम IIT के गेट पे खड़े हैं, बैग पीछे पड़े हैं, मम्मी बाय बाय कर रही है, सबके फोन आ रहे हैं घर पर। सो इफ यू लाइक टू लिव इन टुमारो, और आप आज में नहीं जीते हो, तो इनफैक्ट कोई भी फील्ड आपकी फिर फायदा नहीं है उसका, किसी भी फील्ड में जाने का फायदा नहीं है, नॉट जस्ट रिसर्च, किसी भी, इसमें बस नुकसान ज्यादा होगा आपको और कुछ नहीं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है दैट यू हैव द नॉलेज, यू हैव द टूल्स, यू हैव एवरीथिंग, एंड यू हैव जनरेटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड यू वांट टू अप्लाई इट। लेकिन होता क्या है दैट यू आर ट्राइंग फॉर 6 months, फॉर द पास्ट 6 months, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। ओके, एंड समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स फेल, नहीं होते हैं आगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अगर आप इस सोच में होगे कि आगे जाके कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, इफ यू जस्ट वांट टू डू इट फॉर द फन ऑफ डूइंग इट, आज में जीते हो तुम कि आज क्या करते हैं वो देखते हैं, बाकी होगा जो होगा, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आर यू एक्सट्रीमली पेशेंट? Of course, you are most welcome. बहुत patience चाहिए. Do you believe in giving your 100% if it doesn't pass the given criteria? For example, अगर cut off 93% है और आपकी आई है, आपने अपना बेस्ट दिया है लेकिन आपकी आई 86%, it's all right. You're most welcome. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ पास फेल नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 94 क्या 100 तक पहुंच जाओगे, आपको 100% भी पहुंच जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे वी जस्ट फोकस ऑन द मास्टरी एंड नॉट on cracking the exam. Do you like your field but are confused which path to take? आपको इंजीनियरिंग पसंद है लेकिन आपको पता नहीं कहाँ जाना है, ये you're most welcome, because जिन लोगों को पता नहीं होता वो जीते ही आज में है। Okay, they don't care what's gonna come ahead. Do you believe in mastering instead of cracking? Yeah, I've explained it like more than once. Do you live in today and push yourself to extreme depths to get the job done? आज में जीते हो और किसी चीज को जानने के लिए you can just go to any depth possible. Depths as in subject knowledge. कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा आपसे. Then you are most welcome. Will it be difficult? Yes, of course. इतना ऐसी presentation में सब कुछ difficult ही बताया मैंने. But it will be rewarding beyond expectations, क्योंकि फिर आपको you don't have to worry about your job, you don't have to worry about your, because जब when like people do masters, people complete their masters, they don't care that they are getting a job or not, because it's like obvious, कुछ नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। Okay, लेकिन yes, you'll have to like focus on your subjects. जो तुम्हारी बीटेक के subjects हैं, अगर आपको लगता है कि they are just a waste of time and teachers are wasting a time on you, then you are the most wrong person on this planet. ये एग्जाम्स जितने इंपॉर्टेंट आज हैं वो आगे भी होंगे। आप Amazon चले जाओ, Google चले जाओ, any dream company that you want to work for, they're gonna ask the same things: algorithms, data structures, operating system, DBMS, computer architecture, and जो electronics में उनके लिए, and we have like computer networks, right? So
it's like cumulative of everything. You want to work in cybersecurity, you're most welcome. You want to work in this algorithms and data structures, you are most welcome. You want to work in operating system, you're most welcome. Any field you want to work in, you're most welcome. ठीक है? चलना कैसे है, we'll tell you. Okay, so like this is my number. If you want, you can contact me. And yeah, I think that would be it. I'll stop sharing. Thank you so much for listening. Thank you so much, Pratik Bhaiya. That was really wonderful. Like it's very important to filter out which field you want to do as soon as possible. Otherwise, you will live in dilemma for like next few years, and you will end up nowhere. So उसी के साथ लाइक आपके डिलेमा को सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ एक जूनियर सीनियर इंटरेक्शन, एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अभी जितने भी आपको जो भी डाउट्स हो कॉलेज लाइफ के बारे में, किसी पर्टिकुलर फील्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास अभी आपके लिए स्टेज ओपन है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब मन में कोई शंका रहनी नहीं चाहिए, सब क्लियर कर लो एक बारी में।